हेलो बच्चों, वेलकम टू बोलो फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है। टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है बेटा। इसमें कंपलसरी जेई मेंस में वन क्वेश्चन आते हैं, इधर फील्ड में आते नहीं तो फोर्स पे रहते आते बेटा, उसमें करना चाहिए। इन दिस द मेन कोर कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ इंटरएक्शन. व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन? Suppose consider two charges Q1 and Q2 are separated by a certain distance or in vacuum. The force of interaction F between these two charges is equal to F is equal to क्या बेटा 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R square है बेटा. This is the force of interaction between two charges. Okay. Suppose when a dielectric constant K, when a dielectric constant K and thickness T is introduced between these two charges, the force of interaction would be changes like this beta. F is equal क्या हो जाता है बोलो? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught K into R minus T plus T root K of whole square into Q1 into Q2 हो जाता है बेटा. This is a force of interaction when dielectric constant K is introduced between two charges. Suppose consider two charges say beta. These are the charges. They having the magnitudes Q1 and Q2 here. The force of interaction between the two charges is Fa beta. When they brought contact one to each other like this. Okay. Q1 and Q2 are brought contact one to each other. Then what happening is, according to the conservation of the charge, each charge acquired the what is that average of these two charges. That is equal to when these two charges are separated by the same distance, that is Q1 and Q2. Each charge will becomes Q1 plus Q2 by 2 हो जाता है बेटा. इसके लिए Q1 plus Q2 by 2 हो जाता है. The force of interaction between the two charges are change हो जाता है जैसे F dash. Okay. Suppose consider a ring है बेटा which is carrying a charge Q, right, and having the radius R. It has a radius R, right. When a point charge Q naught is placed at its center, then the tension force in the ring is given by what is the tension force with the T is equal to K Q into Q naught upon 2 pi R square, where capital Q is the charge acquired by this ring. Okay बेटा, लिखो. देखो बेटा, एक प्रॉब्लम पूछा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ इंटरएक्शन में. टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P and S with charge Q on each repel with each other with a force of 60 newtons में बेटा. This is a P sphere है बेटा, ठीक है. This is a S sphere है, ठीक है. Each of carrying the same amount of charge capital Q है बेटा. इसका चार्ज कैपिटल Q है, इसका चार्ज कैपिटल Q है, बेटा. इसका चार्ज कैपिटल Q है. Suppose they are separated by a certain distance. At what distance they are separated we don't know. Let's take the force of interaction is equal to 60 newtons दिया बेटा, और दोनों के बीच का force. A third identical uncharged conducting sphere R is successfully brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between the P and S कितने हो जाता है? इसमें देखो बेटा, F is equal क्या होगा बेटा 1 by 4 pi epsilon naught into Q square upon R square is equal to 60 newtons दिए बेटा फर्स्ट वन कंडीशन में. सेकंड वन कंडीशन में क्या की है? एन आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर बेटा, वो आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर आ रहे बेटा. फर्स्ट ही इसको टच किया, क्या हो जाता है? इसका चार्ज Q by 2 हो जाता है और इसका चार्ज क्या हो जाता है बेटा 2 by हो जाता है.
Next और क्या किया, after that it would be touch with this also, right? इसका चार्ज, दोनों का चार्ज क्या हो जाता है बेटा, क्यू बाई टू हो जाता है, इसका क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू प्लस क्यू इज डिवाइडेड बाई टू, आधा हो जाता है बेटा, दैट इज पर क्या है, क्या हो जाता है बेटा, 3q अपॉन 4 हो जाता है इसका चार्ज. Next when they are separated at the same distance, that is this is what is that P and S. After touching the R with the two spheres, the P sphere of the charge could be q by 2 हो गया बेटा, इसका क्या हो गया बोलो, इसका क्या हो गया बेटा, 3q by 4 हो गया, ठीक है. After touching the uncharged conducting sphere और with P and S और दोनों का चार्जेस ऐसे चेंजेस हो गए. अगेन दे आर सेपरेटेड एट द सेम डिस्टेंस बेटा, इसमें फोर्स क्या हो गया, F डैश है, वो F डैश कितने वो निकालना पड़ता है, F डैश का क्या हो जाता है बेटा बोलो, 1 by 4 pi epsilon naught into q by 2 into 3q by 4 अपॉन r स्क्वायर है बेटा. इसको क्या लिख रहा हूँ देखो इधर, 1 by 4 pi epsilon naught into q square upon r square है बेटा, that r square into 3 upon 8. इसका वैल्यू इज ऑलरेडी नो, व्हाट इज द वैल्यू, 16 न्यूटन से बेटा, दैट इज f डैश तो क्या हो जाएगा 16 into 3 upon 8 है बेटा, 8 1 8 2 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन से. ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा. देखो देखो बेटा और एक प्रॉब्लम दी है 2024 जेईई में पूछे हुए प्रॉब्लम. फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. वो वैक्यूम में वो q1 चार्ज है बेटा और एक q2 चार्ज है, ठीक है. दे आर प्लेस्ड एट ए apart distance r बेटा ऐसा. द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल f दिया बेटा इसका, ठीक है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, f इज इक्वल टू 1 by 4 by epsilon naught into q1 into q2 upon r square है बेटा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा हो गया. नेक्स्ट क्या किया है, when it is placed in a medium of dielectric constant k is equal to 5 here, these two charges are placed q1 and q2 in a medium में भी बेटा, और medium में medium of dielectric constant k is equal to 5 here, एंड इसका बीच का डिस्टेंस r by 5 हो गया बेटा, ओके. देन इन दिस केस द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कितना हो जाता है बोलो, कितना हो जाता है बोलो बेटा, f डैश इक्वल क्या है, f डैश इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught k into q1 q2 upon r square है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू r square by 25 हो गया, ठीक है. इसको क्या लिख रहा हूँ, f डैश इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square है बेटा into 25 upon 5 लिख रहा हूँ इसका, और k वैल्यू 5 है ना, 5 1 जा 5 5 जा हो गया बेटा, इसका वैल्यू कितने f है, दैट इज f डैश इज इक्वल टू 5f हो जाता है बेटा, 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. लिखो और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, और 2023 में पूछे, टू पॉइंट चार्जेस q each are placed at a distance d apart. Two point charges लिखो, this is one of the charge and this other one of the charge. Two point charges each having the charge q है बेटा, ठीक है. they are placed at a distance d apart, they are placed at a distance d apart है बेटा. A third point charge q is placed at a distance of x from the midpoint on the perpendicular bisector. वो perpendicular bisector में at a distance of x पर a point charge q लगा दिया बेटा इधर, right? Perpendicular, the value of x at which the charge q will be expressed the maximum force is, when the charge has to be expressed the maximum force between them. So whatever the
डिस्टेंस को निकालना पड़ता है, और डिस्टेंस कितना निकालना पड़ता है। सो व्हाट इज दैट, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, वो डिस्टेंस d/2 हो जाता है, ऊपर का डिस्टेंस को d/2 जो हो जाता है फ्रॉम सेंटर से, ठीक है। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज, ओ F1 लेवल, the force of interaction between two charges is also same here beta OBF here, okay. The resultant force of these two charges will be acts along the direction, this is the FR here beta, ठीक है। Let's take these two forces are makes an angle theta with this, ठीक है। This F can be resolved to rectangular component in the direction of angle F cos theta beta, other than direction of angle F sin theta हो जाता है ना, because this angle is theta, this angle also will be theta हो जाता है, वो भी theta हो जाता है, चार्ज इधर लगा दिया वो भी थीटा हो जाता है। ओ एफ का दो कंपोनेंट करना पड़ता है बेटा, एफ cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, अदर देन डायरेक्शन ऑफ एंगल एफ sin थीटा हो जाता है। और एफ sin थीटा हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। इसका एफ आर क्या हो जाता है बेटा, एफ आर इज इक्वल क्या है, इंटीग्रल फॉर एफ आर इज इक्वल टू 2f cos थीटा हो गया। इधर देखो वो डिस्टेंस d/2 है, वो डिस्टेंस x है। From this right angle triangle it is very clear that it is equal to x square plus d square by 4 है बेटा, ठीक है। इसका दूर भी सेम है, x square plus d square by 4 हो गया। So what is the force of interaction, F is equal क्या हो जाता है बेटा, F is equal to k into q upon इसका दूर x square plus d square by 4 हो जाता है, स्क्वायर रूट के कैंसिल हो जाते हैं, x square plus d square by 4 है बेटा। वो वैल्यू इसमें लगो क्या मिलता है, द रिजल्टेंट फोर्स Fr is equal to 2 into F value is k q upon x square plus d square upon 4 into cos theta। वो ट्रायंगल में cos theta क्या मिलता है देखो बेटा, cos theta is equal to x upon what is the adjacent side upon hypotenuse है ना, x square plus d square by 4 whole power of 1/2 हो जाता है। वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, x upon x square plus d square by 4 whole power of 1/2 है, ठीक है। एफ आर क्या मिल जाता है देखो बेटा, इसमें एफ आर इज इक्वल टू k 2 k q x upon x square plus d square by 4 whole power of 3/2 हो जाता है। For maximum force for F max क्या हो जाता है बेटा, dy for upon dx is equal to 0 हो जाता है, that is the constant, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाता है बेटा। वो ऐसे एक्सप्रेशन करो u v मेथड का, वो u है into derivative of v है, that is -3/2 into x square plus d square by 4 whole power of -5/2 into 2x है बेटा, प्लस इसका 1 into x square plus d square by 4 whole power of -3/2 is equal to 0 का बराबर हो जाता है। वो वैल्यू उधर लेके जाओ, और 2 गेट्स कैंसिल हो गए ना सर, 2 गेट्स कैंसिल हो गए ना, वो -3x square, द रिमेनिंग टर्म इज -3x square इधर लेके जाओ, 3x square into x square plus d square by 4 whole power of -5/2 है, -5/2 ऐसे लिख लो, into x square plus d square by 4 whole power of -3/2 is equal to क्या हो जाता है बेटा, x square plus d square by 4 whole power of -3/2 हो जाता है ना। इससे क्या मिल जाता है बोलो, 2x square is equal to d square by 4 है बेटा, x square is equal to d square by 8 हो जाता है, और x is equal to d upon 2 root।
इसमें डिस्टेंस में है, व्हाट इज दैट, वो डिस्टेंस में वो दोनों चार्जेस का फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, लिखो बेटा, लिखो। और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, दिस इज आल्सो the question was asked based on the concept of forcement, but to identical charge spheres suspended by a equal length of the strings है बेटा, these are the two identical charge spheres है, they are makes an angle theta with each other है बेटा, वो एक स्फीयर है, ठीक है, वो एक स्फीयर है, they have each of them carrying the same amount of charge है बेटा, let's take q and q है, they makes an angle theta onto each other due to their repulsive force. If the density of the material of the sphere is 1.5 है, इसका density है dV is equal to 1.5 दिया बेटा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. The dielectric constant of water will be. So what when the entire system is dipped into the liquid, what the dielectric constant वो भी निकालना पड़ता है बेटा. And the equilibrium condition में क्या हो जाता है बेटा, they would be at certain particular distance है, वो distance x ले, ठीक है. From suspending point to on the distance x, you should draw one perpendicular foot like this, which is divided of equal distances of these two charges from main position. Okay. At any extreme point, the tension force will be acts toward the suspending point direction. Its weight is acting downward direction mg. ठीक है. And what happening is there, which is makes an angle of theta 2 by theta by 2 हो जाता है. वो angle by theta by 2 हो जाता है. वो angle by theta by 2 है बेटा. और t can be resolved to rectangular components. First one is the t cos का हो जाता है. और एक क्या हो जाता है बेटा, t sin theta है. T sin theta which is balances with electrostatic force है बेटा. Suppose when the system is in the air, so t sin theta by t cos theta क्या हो जाता है बेटा, t sin theta upon t cos theta is equal to fe upon mv हो जाता है बेटा. t sin theta by 2 हो जाता है बेटा, वो theta by 2 हो जाता है because of this angle theta by 2 ना, वो भी theta by 2 है, वो भी theta by 2 है, ठीक है. fe is equal to क्या हो जाता है बेटा, mg into tan theta by 2 है, ठीक है. This is the force of interaction, electrostatic force of interaction between these two charges. When this entire system is dipped into a liquid, so what happening is there, when the entire system is dipped into a liquid, on each sphere what happening is there, a buoyant force Fp will be acts according to the what is that Archimedes principle, weight is acts downward direction mg. F net force is equal क्या हो जाता है बेटा, mg minus mv हो जाता है, that is equal to m dash into g को बराबर हो जाता है, that is f dash is equal क्या हो जाता है बेटा, f dash is equal to mg into rho minus 1 minus dl by dv हो जाता है बेटा. f dash को क्या हो जाता है, ma और mg dash that is equal to mg into 1 minus dl by dv हो जाता है बेटा, और mm gets cancel होते हैं और g dash ऐसा हो जाता है. When the entire system is dipped into a liquid of density dl, इसमें फोर्स क्या हो जाता है बेटा, f dash is equal to mg dash into tan theta by 2, theta is remains same, वो चेंज नहीं हो गया. f dash upon f is क्या हो जाता है बेटा, g dash upon g हो गया, remaining mm and tan theta gets cancel हो जाता है बेटा, इसमें f dash upon f e, that is equal g into 1 minus dl upon dvm by g बेटा, g gets cancel है. इसको क्या लिख रहा हूँ देखो, dv minus dl upon dv है बेटा, that is equal to dv वैल्यू कितने, density of the body is 1.5 है, that is equal to 1.5 minus 1 upon 1.5, that is equal to 0.5 upon 1.5, that is equal to 5 by 15, 1 by 3. f dash by f e क्या हो जाता है बेटा,
वो 1/k हो जाता है डायरेक्टली कांस्टेंट फ्रॉम दिस k is equal to 3 हो जाता है. This question also asked based on the concept of force only. Okay, देखो बेटा q चार्ज का कारण वो q चार्ज है. q चार्ज के कारण r दूर पर क्या हो जाते हैं E is equal to kq upon r square हो जाता है बेटा q चार्ज के कारण. और एक्सटेंडेड चार्ज देखो और an extended charge or linear charge distribution का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर पर क्या हो जाता है देखो इधर r दूर पर तो भी r परपेंडिकुलर इज पर डाल लो. one end is makes an angle alpha, other end is makes an angle beta. At this point में along the x axis में क्या हो जाता है बेटा ax is equal to 2k lambda upon r into sin alpha plus sin beta हो जाते हैं. ठीक है. y axis पर क्या हो जाता है along the y axis direction ey is equal to 2k lambda upon r into sin alpha minus sin beta हो जाता है. ठीक है. Suppose if this conductor is like this there, one end is at infinite distance is there, other end is like this है. That means alpha is equal to क्या हो जाता है बेटा 5/2 हो गया. ठीक है. कमा बीटा is equal to alpha is equal to 5/2, बीटा is equal to 0 हो गया. At this point में ex क्या हो जाता है बेटा ex is equal to 2k lambda upon r हो जाता है बेटा. ey is equal क्या हो जाता है ey also 2k lambda upon r हो जाता है. The net resultant of intensity of electric field E dash क्या हो जाता है देखो इधर E dash क्या हो जाता है बेटा E dash is equal to root over ex square plus ey square हो जाता है. That is E dash is equal to root over ex हो जाता है. But ex value क्या क्या हो गया बेटा E dash is equal to root 2 ex value is 2k lambda by r और E dash is equal क्या हो जाता है बेटा 2 root 2 k lambda upon r हो जाता है. This is the net intensity of electric field at this point P पर. ठीक है. Next the intensity of electric field due to a uniform charged ring of radius r at certain distance x from its center is equal कितना हो जाता है इधर और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा ऐसा लैम्डा है. इसका रेडियस क्या होगा बेटा इसका रेडियस r हो गया r हो गया. एट ए डिस्टेंस ऑफ x पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा रिंग का E is equal to kqx upon r square plus x square whole power of 3/2 हो जाता है इस पॉइंट में. ठीक है. When it is maximum बेटा if r is equal to radius r is equal to plus or minus or x is equal to बेटा when x is equal to plus or minus r by root 2 that implies E tends to E max हो जाता है बेटा. कैसा हो जाता है देखो इधर मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r है ऐसा चेंज हो जाता है. नेगेटिव एक्सिस में ऐसा चेंज हो जाता है. ठीक है. दिस इज माइनस r बाई रूट 2 बेटा इधर इधर माइनस r बाई रूट है इधर क्या हो जाता है प्लस r बाई रूट 2 पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है इधर E max हो जाता है E maximum हो जाता है. ठीक है. और देखो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a disk जिसका डिस्क है बेटा it has a radius r है बेटा at a distance of x दूर पर from its center intensity of electric field क्या हो जाता है देखो intensity of electric field E is equal to sigma upon 2 epsilon naught into 1 minus x upon root over r square plus x square हो जाता है बेटा इधर सेंटर पर x is equal 0 है इधर x is equal 0 है सेंटर पर. So it has the what is the surface charge and sigma बेटा at the center इस चीज को क्या हो जाता है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है. इधर सेंटर पर इस चीज को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है. ठीक है. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए
डिस्क बेटा वो भी डिस्क है. Next, the intensity of electric field due to an arc-shaped conductor है बेटा. Suppose consider linear charge distribution है, कंडक्टर पर linear charge distribution है, वो ऐसा बेंड किया, arc shape में बेंड किया, which is a makes of an angle theta बेटा, the theta ऐसा बेंड किया और रेडियस वेक्टर r है, इसके ऊपर linear charge distribution है ऐसा. So what is the intensity of electric field at a center बेटा? इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क शेप कंडक्टर E इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा 2k लैम्डा अपॉन r इनटू sin थीटा बाय 2 हो जाता है. दिस इज इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क शेप कंडक्टर है बेटा. सपोज कंसीडर a conductor is bent in the form of a semicircular bend. semicircular shape bend हो गए. इधर सेंटर पर इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है इधर थीटा इज इक्वल पाई है ना. Then E is क्या हो जाता है E bar is equal to 2k lambda upon r into sin pi by 2 means sin 90 by 1 हो जाता है बेटा. That is equal E bar is equal to 2k lambda upon r हो जाता है इस कंडक्टर का. ठीक है लिखो बेटा. ओके बेटा 2024 में पूछे क्वेश्चन टू चार्जेस q and 3q are separated by वो q चार्ज है और 3q चार्ज है separated by at a distance r है बेटा. at a distance of r दूर पे सेपरेट किए हैं. ठीक है. in here at a distance x from the charge q the electric field is 0. और चार्ज q से क्या हो गया बेटा इधर से at a distance x दूर पर intensity of electric field E is equal to 0 हो गया. that means this point is called as null point. okay. then the value of x is equal कितना निकालना पड़ता है. at the null point the intensity of electric field discharge E1 and discharge E2 will be equal. okay बेटा. that is E1 is equal to E2 हो जाता है. E1 क्या बेटा kq upon x square is equal to E2 के E2 क्या हो गया बेटा k into 3q upon the remaining distance will be r minus x हो गया बेटा. इसका दूर r minus x हो गया. that is r minus x of whole square है बेटा. q k gets cancelled out. इसमें क्या हो गया देखो r minus x whole square is equal to 3x square है. ठीक है. r minus x whole square is equal to 3x square है और r minus x is equal क्या हो गया बेटा रूट 3x हो गया और r is equal to x into 1 plus root 3 हो गया. x is equal to r upon 1 plus root 3. इतने दूर पर क्या हो जाता है बेटा द इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ठीक है लिखो बेटा. इसमें देखो बेटा और एक प्रॉब्लम पूछे बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ द इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसे करना पड़ता है. फिजिक्स में प्रॉब्लम्स ऐसे थे थोड़ा सोच के करना पड़ता है. ठीक है. A uniform electric field E is equal to 8m by E दिए volt per meter is created between two parallel plates of length 1 meter दिया बेटा. इसका length 1 meter दिए where distance is equal क्या है बेटा L is equal to 1 meter दिए. As shown in the figure an electron is enters with a symmetrical between the plates with a speed of 2 meter per second. ऐसा एंटर हो गया बेटा. this velocity of Vx है. ठीक है 2 meters per second. The angle of deviation of the path of electron it comes out theta is equal to कितने वो निकालना पड़ता है. ठीक है बेटा. सो कितने देर चल गए मतलब कितने टाइम लेते हो बाहर आने के लिए. डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इन टाइम है ना. डिस्टेंस इज इक्वल टू Vx into t है. ठीक है. 1 is equal to 2 into t है बेटा. that is t is equal to 1 by 2 seconds हो जाता है. at the initial time along the y axis direction uy is equal to 0 है ना बेटा. ठीक है. vy is equal क्या हो जाता है vy is equal to uy plus ay into t है बेटा वो 0 हो गया. vy is equal to ay into t हो गया. a is equal क्या लिखता हूँ देखो बेटा vy is equal to a means what is that f of f by upon m into t है. ठीक है. बट एफ आई इसको क्या लिखना पड़ेगा vy is equal to e upon
m इंटू टी हो गया, ई इज इक्वल एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल ई क्यू है बेटा। इसमें वी वाई क्या मिल जाता है बेटा, देखो वी वाई इज इक्वल टू ई वैल्यू इज इक्वल टू 8m अपॉन ई है बेटा, ई वैल्यू इंटू ई अपॉन क्या हो जाता है बेटा m इंटू टी वैल्यू 1/2 है, वो दोनों गेट्स कैंसिल होते हैं। वी वाई इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। वो पॉइंट इधर ले रहा हूँ, देखो वी एक्स इक्वल कितने दिए बेटा, 2 मीटर पर सेकंड है ना, 2 मीटर पर सेकंड। वी वाई इस वक्त क्या है बेटा, वी वाई इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड विच इज मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। वो निकालना है, थीटा कितने कितने हो जाते थीटा, वो 4 हो जाते तो वो भी 4 हो जाते ना। tan थीटा इज इक्वल, देखो बेटा tan थीटा इज इक्वल क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/2 हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। इतने हाइने से बाहर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा सोच कर करना पड़ता है। जे मेंस को sometimes they are asking this type of the critical problems, you should have to take and solve it, okay। लिखो बेटा, और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वो a figure shows a rod AB which is bent in 120 degrees circular arc of radius r है बेटा, वो कैपिटल है, तो रेडियस कैपिटल है, ओके। चार्ज -3 is uniformly distributed over the rod. What is the electric field at the center, इधर निकालना पड़ता है। ऐसा प्रॉब्लम देते तो वो क्या हो जाता है, वो स्मॉल एलिमेंट ले, रिजर्वेशन करो, ऐसा करना, वो बहुत दिमाग खराब हो जाता है बेटा। ऐसा सोचना मत करो। हमारा ब्रह्मास्त्र है ना, चलो ब्रह्मास्त्र के लिए जाओ, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चलो आंसर निकालो। व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र बेटा, ई इज इक्वल टू बोलो 2k लैम्डा अपॉन r इनटू sin थीटा बाय 2 है ना, दिस इज आवर ब्रह्मास्त्र है ना बेटा। थीटा वैल्यू कितने बेटा 120 डिग्री से है, e इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r sin 120 बाय sin 60 हो जाता है बेटा, sin 60 हो जाता है, sin 60 वैल्यू कितने बेटा, e इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r इनटू sin 60 का रूट 3/2 है, 2 कैंसिल हो जाता है, e इज इक्वल टू k लैम्डा रूट 3 अपॉन r। वो भी लैम्डा निकालना पड़ता है बेटा। But from this sector it is very clear that this is 120 degrees, what I am writing in the form of 2 pi by 3 है बेटा, 2 pi by 3। इसका लेंथ कितना है, let's take this length of the AB is equal to L, okay। theta is equal to arc length by radius है बेटा, that is 2 pi by 3 is equal to arc length upon radius। L is equal क्या हो जाता है बेटा, 2 pi r upon 3। this is the value of L है बेटा। But lambda is equal to q upon L है बेटा, that is lambda is equal to q upon L value is equal कितने बेटा, 2 pi r upon 3 है, that is lambda is equal to 3q upon 2 pi r हो जाता है। this is the value of lambda। इस पर लैम्बडा सीधा सीधा आंसर करते हैं, that is e is equal क्या हो जाता है बेटा, k into lambda values 3q upon 2 pi r है बेटा इंटू रूट 3 अपॉन r हो गए, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3 k q अपॉन 2 pi r स्क्वायर हो गए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इसे इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, सो द डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्स towards negative charge direction है बेटा। The negative charge could be in the direction of positive x-axis, in the direction of what I am writing vector of I। This is the answer of this intersection of electric field point होगा, ठीक है बेटा। ऐसा करना वो करना, स्मॉल एलिमेंट लेना, पूरा वो सोचना मत करो, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स के लिए जो सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, ठीक है। देखो बेटा और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, a particle of charge -q at mass cap is moves in a circular radius r around it,
infinity long line charge of linear charge density plus lambda. The time period will be given as, what is the time period? इधर लाइन चार्ज दी है, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा दी है, ठीक है, वो इन्फिनिटी साइड है, इन्फिनिटी साइड ऐसा है, ओके। इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा? इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। ये पार्टिकल ऑफ मास m है बेटा, इसका मास m है, चार्ज माइनस q है, which is revolving around this like this with a radial path r a beta r a, ठीक है। Then what should we have to calculate from this? The period of revolution of the particle would be equal to how much निकालना पड़ता है बेटा। इस पार्टिकल को माइनस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, ये फिर ओके, which is balanced with the centrifugal force Fu is equal to mr omega square को बराबर हो जाता है बेटा। What is the force of interaction between them? Fe is equal to क्या हो जाता है? mr omega square ये बेटा, E is equal to F by Q, F is equal to क्या हो जाता है बेटा? Eq is equal to mr omega square ये, but E value also already know, lambda upon 2 pi epsilon naught r into Q is equal to mr omega square है बेटा, ठीक है। इसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल क्या बोलते हैं देखो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाता है बेटा, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है बेटा, ठीक है। बट ओमेगा इज इक्वल क्या लिख रहा हूँ? 2 पाई बाय t लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल रूट ओवर लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर है बेटा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर है, और t बाय 2 पाई क्या हो जाता है बेटा? t बाय 2 पाई इक्वल टू रूट ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यू है, t इज इक्वल क्या हो जाता है इसमें? t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r बाहर निकालो, r इंटू रूट ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन लैम्डा क्यू है बेटा। वो भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, 2024 जेईई में से पूछे, ठीक है, लिखो। ओके बेटा, और एक प्रॉब्लम देखो इधर, 3 infinity long charged thin sheets are placed as shown in figure. The magnitude of electric field at a point P is x sigma upon epsilon naught है बेटा, the value of x निकालना पड़ता है। क्या है वो चार्ज शीट को, चार्ज शीट है ना, ऐसा चार्ज शीट है, चार्ज शीट को व्हाट इज दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to sigma by 2 epsilon naught है बेटा, ओके, ऑलरेडी नो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है चार्ज शीट के लिए। इसके लिए देखो वो भी क्या है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट हो जाता है? इधर एक्ट हो जाता है E प्लस, ठीक है। वो भी नेगेटिव चार्ज के लिए वो भी इधर एक्ट हो जाता है, वो चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट हो जाता है, वो भी नेगेटिव चार्ज है। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, वो E1 लो, वो E2 है, वो E3 है, E नेट इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा? E नेट इज इक्वल क्या हो जाता है बोलो? E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता है बेटा। E1 means the intensity of electric field due to discharge है बेटा, that is called sigma upon 2 epsilon naught plus E2 means क्या हो जाता है? The intensity of electric field discharge, alternate direction we have taken equal 2 sigma upon 2 epsilon naught है बेटा, plus due to this the intensity of electric field at point P due to this charge sheet is equal to क्या हो गया बेटा? Sigma upon 2 epsilon naught हो गया, because of direction we have taken. For negative charge the direction of intensity of electric field towards हो जाता है, for positive charge the intensity of electric field away from the charge हो जाता है बेटा।
पूरा क्या हो गया देखो बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 2 खत्म है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, प्लस वो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है बेटा। वो इससे कंपेयर करो, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, x सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करो, x इज इक्वल क्या मिलता है बेटा, x इज इक्वल टू 2 मिलता है। ठीक है, लिखो बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट वन गॉस लॉ है। व्हाट इज द गॉस लॉ, फाइंडिंग ऑफ E डॉट dA is equal to q net by epsilon naught है बेटा। that means the total electric flux passing through any closed surface, इसमें q naught लगा दिया, इससे फ्लक्स ऐसे जा रहा है, so the total electric flux passing through any closed surface is equal to q net by epsilon naught times हो जाता है बेटा, this is Gauss law। suppose consider a sheet है, metal sheet है, it has a surface charge जैसे सिग्मा है बेटा, इससे the intensity of electric field और दूर पे क्या हो जाता है, E is equal to सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है बेटा। ठीक है, सपोज कंसिडर क्यूब है बेटा, ऐसे क्यूब, वो क्यूब है, क्यूब में अंदर में क्या लगा दिया, एक चार्ज लगा दिया, ऐसा वो क्यूब है बेटा, क्यूब है, क्यूब में अंदर में एक चार्ज लगा दिया, इसमें क्यू चार्ज लगा दिया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट एनी वन ऑफ द सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑल सरफेसेस विल बी इक्वल हाउ मच बेटा, इसमें ऑल सरफेसेस इक्वल क्या हो जाता है, पाई ऑफ E इज इक्वल टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है बेटा। बट एक सरफेस में कितना फ्लक्स चल जाता है, एक सरफेस में, पर फाई वन सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, q by 6 epsilon naught because of the cube has a 6 surface areas। suppose consider a charge is placed like this at this point अगर the charge is placed ऐसा, वो सरफेस एरिया में कितना फ्लक्स चल जाता है, बोलो, पाई ऑफ E इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो दोनों सरफेसेस हैं, एक सरफेस में कितना हो जाता है, तो 2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, इधर भी 2 बाई एप्सिलॉन नॉट है, इधर भी वो सरफेस में कितना जाता है बेटा, वो सरफेस में सेम जाता है, दैट इज इक्वल टू पाई ऑफ E इज इक्वल क्या हो जाता है, बोलो, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, पाई नेट इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, पाई नेट इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ना, सही है नहीं। This is electric flux passing through this cylindrical surface of area of the cross section। ठीक है, सपोज कंसिडर क्यूब ऐसा लगा दिया बेटा भाई, क्या क्यूब ऐसा लगा दिया, ऐसा एक क्यूब है, क्यूब ऐसा लगा दिया, क्यूब ऐसा लगा दिया, देखो वो क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, एक क्यूब का सरफेस में देखो, वो सरफेस में ऐसा है, वो सरफेस में ऐसा है, वो सरफेस ऐसा बेटा, वो सरफेस में कितने फ्लक्स चल जाता है, इधर पे चार्ज लगा दिया, क्यू चार्ज लगा दिया, कितने फ्लक्स चल जाते हैं, इसमें कितने फ्लक्स चल जाते हैं, देखो बेटा, 1 क्यू पाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स चल जाता है वो सरफेस एरिया में। ठीक है, और भाई एक क्यूब ऐसे है, एक क्यूब ऐसे बेटा, क्यूब ऐसे ऐसे एक क्यूब है, इसमें क्या लगा दिया, एक रॉड ऐसा लगा दिया, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड ऐसा लगा दिया, वो यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, वो यूनिफॉर्म चार्ज है, सो यूनिफॉर्म चार्ज ऐसा लगा दिया, वो रॉड से कितने फ्लक्स चल जाते हैं, देखो बेटा कितने तक, √3 लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई इज इक्वल टू √3 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल जाता है। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडीज है बेटा।
और देखो मैं एक कोन लगा दिया बेटा, कोन ऐसा है, एक कोन है, कोन ऐसा है, देखो इधर एक कोन है। सपोज कांस्टेंट चार्ज इधर ले, इधर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वुड बी लाइक इज राइट, सरफेस एरिया ऐसे है, इधर चार्ज लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसा जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और ऐसा जा रहे हैं। सो दिस इनकमिंग फ्लक्स हो जाता है बेटा, वो भी आउटकमिंग फ्लक्स हो जाता है। इनकमिंग फ्लक्स पाई इनकमिंग इज क्या है बेटा, माइनस पाई हो जाता है, पाई आउट गोइंग क्या हो जाता है बेटा, पाई आउट इज इक्वल टू प्लस पाई हो जाता है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस पे पाई नेट इज क्या हो जाता है बेटा, पाई नेट इज इक्वल टू पाई इन माइनस पाई आउट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू पाई इन इज इक्वल टू पाई आउट हो जाता है। ठीक है, suppose constant charge is placed on this cone like this, okay, charge इधर लगा दिया बेटा, चार्ज इधर लगा दिया, चार्ज इधर लगा दिया, the lines of force are passed through like this, okay, the lines of force are passed through the surface area beta, which is looking like what is that solid angle है ना, omega, omega, the solid angle is given by omega is equal to 2 pi into 1 minus cos theta हो जाता है। दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर सॉलिड एंगल। ठीक है बेटा, देखो देखो बेटा और एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ में दी है। इसमें दी चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द कॉन्फिगरेशन है बेटा। सो इससे कितने फ्लक्स बाहर आ रहे हैं वो निकालना पड़ता है। ठीक है, कैसा निकालना पड़ता है बेटा, according to the Gauss law, the total electric flux passing through in any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge across the well surface. ठीक है, that is pi of E is equal to pi integral of E dot dA is equal to Q net upon epsilon naught है। सरफेस में Q net कितना हो गया बेटा, देखो सरफेस में Q net कितना हो गया, प्लस 5Q माइनस 2Q 3Q प्लस Q, that is what 4Q है ना, वो 4Q चार्ज only responsible for the flux coming through this surface के लिए, surface के लिए कितने चार्ज है फ्लक्स बाहर आ जाता है बेटा, बोलो कितना चार्ज से फ्लक्स बाहर आ जाता है, खाली फॉर 4Q है, वो चार्ज भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते, वो चार्ज भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते। ठीक है, दैट इज फॉर पाई ऑफ E कितना हो जाता है बेटा, Q नेट कितना हो गया बेटा, 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। बहुत आसान प्रॉब्लम है बेटा, 2024 में पूछे, आया ना यार, बोलो आ गया ना, लिखो। ओके बेटा, और एक प्रॉब्लम देखो इधर, C1 एंड C2 आर द टू कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स क्लोजली विद द चार्जेस 2Q एंड 3Q है, रेस्पेक्टिवली आई शोन द फिगर द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू C1 एंड C2 कितने बनेंगे, वो C1 है बेटा, वो C1 क्यूब है, वो C2 क्यूब है। ठीक है, C1 क्यूब में कितना फ्लक्स आ जाता है, इसमें 2 क्यूब चार्ज लगा दिया ना, टोटल C1 क्यूब में पाई1 इज क्या आ जाता है बेटा, पाई1 इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। किसके लिए, वो ऊपर का और एक है ना, वो C2 क्यूब है, C2 क्यूब पर कितने फ्लक्स आ जाते हैं बेटा, दे बोलो कितने फ्लक्स आ जाते हैं, इसमें 3Q चार्ज के लिए फ्लक्स आ जाते हैं, 2Q चार्ज के लिए फ्लक्स आ जाते हैं, वो बड़ा क्यूब में। ठीक है, देयरफॉर टोटल चार्ज बड़ा क्यूब में क्या हो जाता है बेटा, पाई2 इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है बड़ा क्यूब के, बड़ा क्यूब के Q नेट क्या हो जाता है 2Q प्लस 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, इसका पाई2 है बेटा, दैट इज इक्वल टू 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। क्या पूछे इधर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2, C1 अपॉन C2 इज क्या होगा बेटा, पाई1 अपॉन पाई2 हो गया, पाई1 वैल्यू कितना बेटा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा,
सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा बोलो, टू 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 बाई फाइव हो गया। इतने फ्लक्स, इतने रेशियो ऑफ द फ्लक्स बाहर आ जाते हैं दोनों। ठीक है, देखो और प्रॉब्लम देखो बेटा, based on the electric field and flux में दिए इधर, and electric field is given by 6i plus 5j plus 3k Newton per coulomb. The electric flux through the surface area is 30 I meter square line in the YZ plane है। फ्लक्स निकालना पड़ता है, कैसे करो वो देखो बेटा, कैसे करना है बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिए और एरिया दी है, क्या निकालना पड़ता है, फ्लक्स निकालना पड़ता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्लक्स बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए है ना, ई बार डॉट ए बार है। ठीक है, ई वैल्यू दी है दैट इज 6i प्लस 5j प्लस 3k डॉट 30 आई दी है बेटा, 30 कंपोनेंट ऑफ आई दी इधर आई दी है। सो आई डॉट आई इज कितने बेटा 1 दैट इज 6 into 30 हो गए, प्लस j डॉट आई 0 प्लस k डॉट आई 0 हो गए, दैट इज इक्वल टू 180 हो गए। बहुत आसान है प्रॉब्लम बेटा, तो 2024 में पूछे। ठीक है, देखो ओके देखो बेटा और एक प्रॉब्लम को 2024 में पूछे। टू पॉइंट चार्जेस 5q and 3q are situated at the points 3a, 0 and minus 5a, 0 respectively. The electric flux through the sphere of radius 4a having the center and origin is equal to कितने। ओके वो कैसे करना बेटा, देखो वो 5q दिए 3q दिए, हाँ चार्जेस 3a, minus 5a में रखा दिए। तो what is the sphere has the radius is 4a बेटा, let us consider a sphere here, तो sphere of radius 4a बेटा। ठीक है, this is the positive x axis है, इस y axis है। ठीक है, प्लस y है, वो माइनस y है, वो प्लस x एंड माइनस x है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या दिया है, 5q and 3q charges are situated at points 3a, 0 means which is on x axis बेटा, positive x axis 3a, 0, इधर 5q चार्ज रखा दिया, 5q चार्ज has to be placed here। नेक्स्ट minus 5a, 0 इधर out of the sphere, minus 5a, 0 at this point, what is that 3q charge has to be placed at this point. So find the flux passing through this sphere would be how much. So the flux passing, the outgoing flux from the sphere only this 5q charge only. Okay, according to the Gauss law, what is that, pi of E is equal to pi integral of E dot dA is equal to q net upon epsilon naught. So this plus 3q charge is out of the sphere, it would not be responsible for the flux coming from the sphere. Okay, only this 5q charge only responsible for the flux coming from the sphere like this, right? That is called pi of E is only our other beta, q net means 5q upon epsilon. बहुत आसान प्रॉब्लम है बेटा, 2024 में पूछे, 4 मार्क्स आते जेब में लगाओ। चलो आगे क्वेश्चन में जाओ। ठीक है, लिखो। ओके बेटा, प्रॉब्लम देखो 2024 एडवांस ही है, वो जे ही नहीं एडवांस में मुझे बहुत आसान है, बहुत आसान प्रॉब्लम है बेटा। ए चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर पॉइंट ऑफ पी, इधर एक चार्ज लगा दिया बेटा, चार्ज क्यू लगा दिया इधर cylindrical region of two edges, subtend half angle theta p as shown in the figure. When theta is equal to 30 degrees, the electric flux through the curved surface कितना हो गया? When the theta is equal to 60 degrees, then the electric flux through the curved surface becomes pi by root n meter, where the value of n is equal to कितना? So what is that at this point? Total solid angle कितने बेटा? Omega is equal to 2e into 2 pi into 1 minus cos theta beta, that is equal to 4 pi into 1 minus cos theta हो गया। ठीक है, वो सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस में कितने जाते हैं बेटा, कर्व्ड सरफेस, द एंगल मेड बाय दिस कर्व्ड सरफेस इक्वल कितने हो जाते हैं, पाई इज इक्वल टू पाई कर्व्ड
पाई करोड़ इज इक्वल टू 4 पाई माइनस ओमेगा हो जाता है बेटा, दैट इज फॉर 4 पाई इंटू ओमेगा वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 4 पाई प्लस 4 पाई कॉस थीटा हो जाता है, वो इधर लिखो, दैट इज 4 पाई गेट्स कैंसिल, पाई करोड़ इज इक्वल टू पाई करोड़ इज इक्वल कितना बेटा 4 पाई इंटू कॉस थीटा हो गया, बट 4 पाई हैंगल में कितना चार्ज जाता है, कितना फ्लक्स जाता है, Q by epsilon naught चार्ज जाते हैं इससे इंटू कॉस थीटा बेटा, दैट इज पाई करोड़ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, पाई 30 अपॉन पाई 60 इज इक्वल टू बोलो, पाई 30 अपॉन पाई 60 इक्वल कितना हो जाता है बेटा cos 30 अपॉन cos 60 हो गया, दैट इज इक्वल टू √3/2 बाय 1/2 है, दैट इज इक्वल टू √3 हो गया, बट पाई 60 इक्वल कितना बेटा, पाई 60 इज इक्वल टू पाई 30 वैल्यू पाई दे पाई अपॉन √3 हो जाता है, दिस इज इक्वल पाई बाय √10 से कंपेयर करो, n इज इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है बेटा, ऐसा सोच के वो प्रॉब्लम्स करना पड़ता है बेटा, अब फिक्र मत करो, बोलो फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करो, IIT मारो, ठीक है, राइट बेटा लिखो।